सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट में आपने कितनी टाइप की सब्सिडीज पढ़ ली है, लाइक सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज बीइंग गिवन टू यू, टेल मी. कौन? फर्टिलाइजर, पावर सब्सिडी, वेरी गुड. हाँ, लोन, वेरी गुड. लोन में हमने देखा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, क्या है वो? सब्सिडी है. फार्म लोन वेवर्स आर व्हाट? सब्सिडी. व्हाट एल्स? सीड सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी, फोर्थ, फिफ्थ फूड सब्सिडी, यस. वाटर इरिगेशन, यस, yes, that is also there. Machinery, tractors are given at a subsidized rate. और अभी MSP पढ़े हो वो. तो अब जब क्वेश्चन अगर आता है, आप लोगों से पूछते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज गिवन टू फार्मर्स, तो आप नहीं लिख सकते हो. तो बस इसके लिए ना एक अलग सा एक होता है कि कई बार मैं लेक्चर लेता हूं, लेकिन यही सब है अल्टीमेटली. सो लेट मी गिव यू एन आइडिया क्विकली अबाउट these subsidies. It's directly explicitly given in the syllabus. Apart from what we have covered, it's like explicitly given. So that's why I just put one kind of discussion about this, so that you can have all the points at one place. Chalo. Now first of all, you should know that the subsidies. What are the subsidies and why it should be given? What according to is the rationale behind the subsidies? Subsidies are the form of government support given to the farmers to encourage production, given to the farmers to encourage production. Clear? So subsidies are the government support given to the farmers to encourage the production of crops. कर सकते हूँ. Now this subsidies, this support actually became important. Why? Because most of our farmers in our country is 86% of the farmers, they are small and marginal. Now when you have the small and marginal farmers, tell me, do they have the extra surplus to buy, even buy the purchase, the inputs for the next season? No, not at all. Yes or no? So thereby what happens? The reason the government provides the support so that it encourages them to cultivate. Because if you don't give the subsidies, how will they be able to buy the inputs? And if they are unable to buy the inputs, that will affect the agricultural production, which will hamper the food security. That will hamper the food security. So thereby subsidies are given mainly in the context of this part. Mainly in this context. So if I talk about from you, if I talk, these subsidies are given to the farmers. These subsidies are given to the farmers through direct or indirect. Through direct or indirect. Now what I mean with the direct? DBT, yes. So subsidies, if it is transferred directly to the bank account, it is direct, which you call it in the other term is also cash based subsidies. It is nothing but the points which we are going to see will also say or cash based subsidies. On the other hand, if I talk about indirect subsidies, what I mean with the indirect? Sorry? Yes, cutting the prices in the input. That means you are getting the product from the market at a subsidized rate. That is known as indirect. Clear? So before we go into the analysis of direct and indirect, that what advantages direct subsidies have over the indirect, before we go into that analysis, you should know or you should write about
द बेनिफिट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ गिविंग सब्सिडीज इटसेल्फ। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सब्सिडीज के बेनिफिट्स क्या है। आप बता दो जैसे क्या होंगे। सॉरी, very good, income security. I'll give you the fact that actually this subsidy contributes 20% of the farmer income. So पहली तो yes, income security. I'll dictate the point, but I want you to brainstorm. और क्या हो सकता है benefits में? Yes, so basically agricultural production you can say, and consequently food security. और word अच्छा लिखना है, nutritional security also. Clear? तो एक point ही हो गया। It lowers the risk, yes, to a certain extent. और अच्छे points. Employment generation भी है, ठीक है. Basically poverty alleviation, I would say that's a better word, है ना. So like this you have to do the brainstorming by yourself also ना. चलो इसको लिखो, कुछ points लिखते हैं subsidies में. एक डायग्राम भी ना ये भी बना लेना, लेकिन पहले एक पॉइंट लिख लो. सब्सिडीज, एग्रीकल्चर सब्सिडीज इज द फाइनेंशियल सपोर्ट, गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स mainly small and marginal for undertaking agricultural production. अब आपको ना एक बस ये बना दे रहा हूं मैं. Just at a single place you should have an idea about the different type of agricultural subsidies. So here you can make it or write it down. जो हमने जैसे स्टार्टिंग से पढ़ा, सबसे पहला इनपुट सब्सिडी लाइक सीड्स बेसिकली, क्योंकि इनपुट में और भी दे रहा हूं मैं, तो आप सीड्स लिख सकते हो डायरेक्टली. देन we talked about credit, so you can write down about credit subsidy. ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिख दो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, फार्म लोन वेवर्स. क्लियर? आफ्टर क्रेडिट वी कवर द टॉपिक नोन एज इंश्योरेंस. Haven't we seen that government give insurance subsidy also? In bracket you write it down, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. Next we have discussed is irrigation. Under irrigation you write it down, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. And there is a fund known as micro irrigation fund. Then we have power subsidy, in bracket free power in certain states. Then we have fertilizer subsidy, in bracket urea and NBS regime, ठीक है. Then we have farm mechanization में basically all that in bracket में tractors hire करने के लिए, farm mechanization. Lastly one more is MSP. क्लियर? ये होती है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज. नाउ यू राइट इट डाउन, क्रिटिकल एनालिसिस, और 2 columns and make 2 columns. One is benefits and second is concerns. अगेन ये पॉइंट भी ना पहले बेनिफिट्स लिखवाता हूं और कंसर्न्स देखना मैं आप ही से पॉइंट्स निकलवाऊंगा. ठीक है. बेनिफिट्स का पहला पॉइंट, फर्स्ट, सब्सिडीज हेल्प इन द desired structure of agricultural production. Subsidies help in the desired structure of agricultural production.
आप समझ रहे हो डिजायर्ड स्ट्रक्चर. Can you tell me the incidences in the past that how government subsidies help in the desired structure? Very good. Green revolution. Green revolution में government ने subsidies दी. They were able to get the high production of cereals. So in bracket, success of green revolution. Clear? Second, food security and achieving self-sufficiency. Food security and achieving self-sufficiency. Third, adoption of technology. Adoption of technology, yes or no? That will lead to increase in productivity. Yes or no? Fourth, contribution to farmers' income. In bracket, 21%. Around 21%. Clear? Next is reduced disparity between small and marginal. Reduced disparity between small and marginal farmers. And lastly, encourage crop diversification. Encourage crop diversification. ठीक है, if you want to encourage, by promote the cultivation of certain crops, this will help in encouraging crop diversification. अब चलो बात करते हैं कंसर्न्स की. What do you think are the concerns of giving high subsidies? सब पॉइंट हम पढ़ चुके हैं. फर्स्ट चलो लिख लेते हैं, आप लिखते भी जाना और आप ही से पॉइंट्स निकलवाने, मेरे को 5 कम से कम. फर्स्ट, ह्यूज फिस्कल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट. ह्यूज फिस्कल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. सेकंड, तो इसको हम लिखेंगे, अच्छा वर्ड अपन पढ़ चुके हैं ना, डिस्टॉर्ट क्रॉपिंग पैटर्न, स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न. क्लियर? तो हम लिखेंगे सब्सिडीज डिस्टॉर्टेड क्रॉपिंग पैटर्न. और वही सेम पॉइंट जो हमने एमएसपी में लिखे, लीडिंग टू मोनोकल्चर. लीडिंग टू मोनोकल्चर. क्योंकि आप बात तो ये समझो, क्योंकि सब्सिडीज इट्स लाइक लीडिंग टू मोनोकल्चर. हम जो एमएसपी कंसर्न्स पढ़े हैं, फर्टिलाइजर के कंसर्न पढ़े हैं, ये सब क्या है? सब्सिडीज की तो कंसर्न है. So leading to monoculture that will affect the soil health and ultimately reducing productivity. आप बस ऐसे एरो मार के करते चलो. Soil health decline, productivity decline. Then next, yes, very good. इसको अपन क्या लिखेंगे? हाँ लिखो चलो. ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस, ओवर यूज और वेस्टफुल, आई वुड से, और वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेस. अब इसका पहला सब पॉइंट लिखो, फर्टिलाइजर्स. देखो सब्सिडीज होता है तो हमें क्या लगता है कि चलो और यूज करते हैं. यस और नो? मैं आपको देखो 3 पॉइंट बताऊंगा इसमें, ओवर यूज और वेस्टफुल. पहला फर्टिलाइजर, इसमें लिख देना रिजल्टिंग इनटू इम्बैलेंस इन द सॉइल हेल्थ, या जो आइडियल एनपीके रेशियो होता है दैट गेट्स डिस्टॉर्टेड. फिर आगे की कहानी आपको पता है. सेकेंड सब पॉइंट, वाटर का ओवर यूज होगा नहीं होगा? लिखो ओवर यूज ऑफ वाटर. हाइफन में ग्राउंड वाटर क्राइसिस. यस और नो? थर्ड, वेरी गुड, पावर. इसका फ्री पावर मिलती है, ओवर यूज ऑफ पावर. इसका लॉस आपको पता है कौन भुगतता है? डिस्कॉम्स. डिस्कॉम्स को तो कॉस्ट देनी पड़ रही है. डिस्कॉम्स जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको तो कॉस्ट बाय कर रहे हैं, लेकिन फार्मर्स को फ्री में दे रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग ओवर. तो अल्टीमेटली दे आर रनिंग लॉसेस. तो ये जो डिस्कॉम्स रनिंग लॉसेस ना, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज. दे हैव फोर्स्ड देम टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री पावर टू देम.
और भी रीजंस हैं, ये नहीं है कि मीटरिंग ही सिर्फ एक रीजन होता है, चोरी ही सिर्फ एक रीजन होता है, नहीं। आई एम टेलिंग यू द प्रॉब्लम मेजर लाइज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज इटसेल्फ, ठीक है। सो ये आपका आता है ओवर यूज, जिसमें तीसरा पॉइंट ये हो गया। उसके अलावा मोनोकल्चर भी हमने लिख लिया ना, ठीक है। बर्डन भी लिख लिया, फिस्कल बर्डन भी, ठीक है। ये लिख सकते हो नहीं, सब्सिडीज की एक मेजर प्रॉब्लम बता रहा हूं, लीकेजेस, तो ये आप लिख लो, लीकेजेस ड्यू टू ब्लैक मार्केटिंग, डाइवर्जन, leakages means the subsidies don't go to the desired farmers or desired target due to black marketing, diversion to the other sectors. Yes or no? Lastly, tell me, is it a short term solution or long term solution? Short term only. So short term solution rather than the focus on the structural reforms, rather than the focus on the structural reforms, ठीक है। अब इसमें जो एक मेजर कंसर्न हो क्या रहा है, अब यहां की मैं आपको कहानी बताता हूं WTO के साथ लिंक करके, अब सुनना, ठीक है। पहले अपने में बात करो, फिर सुनो, यहां पे ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। सी, अब गवर्नमेंट तो इतनी ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, लेकिन WTO में एक एग्रीमेंट है, WTO का एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। WTO का एक एग्रीमेंट है ऑन एग्रीकल्चर, under which it says that the subsidy which are increasing the production, आप चलो पहले ये नहीं, इस कहानी से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट चेक करता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, इफ आई गिव मोर सब्सिडीज टू द फार्मर्स, द फार्मर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हायर और लोअर, एंड इफ फार्मर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो मार्केट में वो कम प्राइस पे आएगी। इफ इट इज कमिंग एट अ लोअर प्राइस एंड इंटरनेशनली द प्राइस विल बी हायर, will we be importing that crop or will we be exporting that crop? Exporting. So don't you think that to a certain extent, if the government gives so many subsidies for agricultural production, don't you think it is likely to increase the export? Yes or no? But is it you can say a fair method of increasing the export? क्या ये fair method है? I would say no. ऐसे तो हर गवर्नमेंट जिसके पास ज्यादा पावर है वो ज्यादा पैसा नहीं दे देगा। Are you getting my point? So thereby WTO, when it was created with a single aim to ensure free and fair trade and establish a rule based trading system, कि आप ट्रेड करो and you promote your exports, but it should be free and it should be on a fair means. It should not be by, you can say, through an unfair means. It should not be through that way method. लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि हमारी गवर्नमेंट में और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज एग्री टू दिस दैट यस सी वी हैव टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू द फार्मर्स. I need to provide subsidies to the farmers. Now tell me, when you give subsidies to the farmers, it will bring down their cost of production, and when the cost of production, at the same time it will also encourage the production by the farmers or not, which will increase the supply resulting into lower prices. तो दो चीजें होंगी सब्सिडीज से फार्मर्स के पास, एक तो वो प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारी कंट्री में एंड जो प्राइसेस है वो रिड्यूस होंगे. यस और नो? अब गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है कि आई हैव टू गिव दिस सब्सिडी टू द फार्मर्स. व्हाई? बिकॉज आई एम अ डेवलपिंग कंट्री. आई हैव टू लुक आफ्टर द फूड सिक्योरिटी ऑफ माई कंट्री. आई एम नॉट डूइंग दिस to promote the exports. I am not giving this subsidy to the farmer to promote our exports. No, I am not doing that. I am giving this subsidy so that my farmers or basically can ensure the agriculture production that meet our food security.
and thereby I'll be responsible for the procurement of the crops. That subsidized product will not go into the open market. They try to ensure that. इस तरीके से उन्होंने इंडिया ने डिफेंड किया, इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, that I have to give the subsidies. Clear? Because without subsidies, farmers will not will not undertake production. If production reduce, my food security will be compromised. But WTO ने ये बात सुनी कि ठीक है, we can understand your thing and we are like okay कि आप जो सब्सिडीज दे रहे हो उसको आपको फूड सिक्योरिटी के लिए करनी है. We understand your that point. But the subsidy which you are giving, these subsidies are directly, they are directly increasing the production. They are directly related to the production or not? Now when these subsidies are directly related to the production, they fall under a box known as amber box. थोड़ी सी स्टोरी है. They fall under a subsidy box known as amber box. ठीक है. अब जब ये एम्बर बॉक्स में आती है तो WTO ने क्या किया है? WTO know these subsidies, tell me, are they trade distorting or non trade distorting? ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना. तो WTO किसके लिए आया? कि फेयर ट्रेड होना चाहिए. बट दीज सब्सिडीज आर डिस्टॉर्टिंग. बट एट द सेम टाइम हमें डेवलपिंग कंट्रीज का कंसर्न भी पता है कि उनको फूड सिक्योरिटी मीट करनी है. तो WTO has allowed such subsidy which directly increase the production or directly related to the production, but set a maximum limit on the subsidy. But it set a maximum limit on this subsidy कि आप दो कोई बात नहीं, लेकिन एक मैक्सिमम कैप फिक्स कर दिया है. And this maximum limit is governed by a provision known as de minimis provision. This maximum limit is governed by a provision known as de minimis provision. Are you getting my point? अब ये जो de minimis provision होता है, it says that developed countries can provide the subsidy up to 5% of the value of agricultural production. 5% of the value of agricultural production. And if I talk about developing country, they can provide the subsidy up to 10% of the value of agricultural production. So developing countries can provide the subsidies up to 10% of the value of total agricultural production. Got it? चलो बहुत बढ़िया. अब यहां तक हमें बात समझ में आती है, लेकिन इंडिया बोलते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो कीप्स ऑन चेंजिंग ना. 1980 में कुछ होगा, 85 में कुछ होगा, 90 में कुछ होगा. सो ऑन व्हाट ईयर, ऑन विच ईयर वैल्यू यू आर टॉकिंग अबाउट? तो WTO said that you have to give the maximum subsidy by taking into account the value of agricultural production in these years. इस टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, इसका 10%. अब खुद सोचो, इतना पुराना, पहले तो 1986-88 नंबर 1 प्रॉब्लम. तब इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना होता भी नहीं था, बिकॉज इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन जस्ट स्टार्टेड टू यील्ड रिजल्ट. तो सब्सिडी ऑटोमेटिकली जो लिमिट है इंडिया के लिए वो कम हो गई, नहीं होगी. और डेवलप्ड कंट्रीज का तो 5% भी उससे ज्यादा निकलेगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज वाज फुली मैच्योर, दे हैव अडॉप्टेड द टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एंड ऑल. बट हमारे में है ही नहीं वो. तो पहला कंसर्न ईयर गलत है कि नहीं है? सेकंड, यार 1986 से लेके आज 30 साल से ऊपर हो गई कहानी, 40 साल होने वाले हैं. आप इन्फ्लेशन तो जोड़ लो 40 साल में, आप कम से कम वो तो कर दो.
जो वैल्यू उस टाइम पे 100 रुपए की है वो कम से कम आज 1000 रुपए से तो बड़ी है। अगर सपोज उस टाइम पे सब्सिडीज मेरी 1000 निकल रही है तो आज तो वो 1 लाख के ऊपर निकलनी चाहिए, लेकिन आप स्टिल यू आर गोइंग विद दैट। एक तो आपका ईयर बेकार है, एंड ईयर बेकार होने के बाद आप उसके बाद इन्फ्लेशन नहीं ऐड कर रहे हो। हाउ विल बी लाइक ensure that our subsidies are under this limit? Yes or no? अब लेकिन कहानी और आगे बढ़ती है, ठीक है, इंडिया वॉज स्टिल विथ इन दैट यू कैन से लिमिट जोन। ये कहानी अब आती है 2013 में। 2013 somehow I don't know, नहीं somehow I don't know क्या मतलब, we know that the election year was next 2014, तो गवर्नमेंट वाज लाइक कि भैया आप सिर्फ गरीबों के साथ साथ हमें बाकी पॉपुलेशन को भी खुश करना है। तो ओवरऑल 66% ऑफ द पॉपुलेशन हैव बीन डिसाइडेड, सॉरी हाँ 66 हो गई ना, टू दैट वी विल प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड, सब्सिडाइज्ड राइस, व्हीट, कोर्स सीरियल्स, नॉट जस्ट ओनली टू द बीपीएल, क्योंकि आपकी 75% रूरल और आपकी अर्बन 50%, तो आप बाकी लोगों को भी कवर कर रहे हो ना। You will be getting this much subsidized rice, wheat, core cereals at this particular price. अब सब्सिडाइज तो आपने कैसे दे रहे हो? बेसिकली आप जब सब्सिडाइज देने के लिए आपके पास भी तो होना चाहिए, यस और नो? और आप कहां से ला रहे हो? आप ला रहे हो एमएसपी से। सो डोंट यू थिंक एमएसपी विल इंक्रीज, एमएसपी बर्डन विल इंक्रीज? Yes, and when MSP burden will increase, total agricultural subsidies, will it increase? Yes. If you increase the total agricultural subsidies, that started to go beyond this limit. अब WTO की अगर लिमिट को आप क्रॉस करते हो, any country can take an action against you and take you to the WTO dispute resolution mechanism. लेकिन इंडिया ने कहा भैया हमें देना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी मीट करनी है हमें, वी हैव टू मीट फूड सिक्योरिटी। तो आइडिया क्या है? फूड सिक्योरिटी वर्सेस फेयर ट्रेड। WTO is created for this, but developing countries is striving for this. अब 2013 में चलने लगा ये डिबेट, चल तो 2012 में भी रहा था, तो चलने लगा। 2013 में आई आपकी बाली कॉन्फ्रेंस, 2013 में आई बाली कॉन्फ्रेंस। एज आई टोल्ड यू, कभी भी एग्रीमेंट कुछ भी होता है, इफ यू आर थिंकिंग कि यू आर द कंप्लीट विनर, देन यू आर हैविंग अ वेरी नैरो थिंकिंग, या भूल जाओ। इंडिया को चाहिए था कि मेरे को डेवलपिंग कंट्रीज वाला ये जो है, हमें इसका एग्रीमेंट क्लियर हो जाए कि हम चाहते हैं ये ईयर एक तो न्यू हो जाए, प्लस लिमिट कुड बी इंक्रीज्ड, सो दैट वी आर सेव्ड फ्रॉम वायलेटिंग दिस लिमिट। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज को और भी कुछ चाहिए था। दे वर लाइक कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, यहां पे ट्रेड टाइम ना जो होता है, टर्न अराउंड शिप्स विप्स का ना बहुत टाइम लगता है एट द पोर्ट्स, वी नीड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देयर। तो डेवलप्ड कंट्रीज भी एक एग्रीमेंट लेके बैठे थे जिसका नाम था ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, विच विल इंप्रूव द ग्लोबल ट्रेड। व्हाई? रिड्यूसिंग यू कैन से क्लियरेंस टाइम एट द पोर्ट्स। चलो वहां तक भी आपकी कहानी समझ में आई, बाय रिड्यूसिंग द क्लियरेंस टाइम। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को भी कुछ चाहिए था, सो डेवलपिंग कंट्रीज एग्रीड टू दैट, WTO में TFA साइन हो गया, एंड व्हाट डेवलपिंग कंट्रीज गॉट इट, दे गॉट अ बाली पीस क्लॉज। Bali peace clause, which means that even if the developing country breach this limit, nobody would be taking them to a court, or not court क्या means WTO dispute resolution, and our subsidies were generally higher than this limit only. तो अपने को एक बाली पीस क्लॉज मिला, but then what India is finding? India is finding a permanent solution on food security. ये permanent थोड़ी नहीं, ये तो बस एक interim peace clause है। permanent solution तब होता जब हम बोलते कि हाँ ये जो ईयर है चेंज हो गया है और इसकी लिमिट बढ़ गई है। ये तो भी peace clause है, मतलब we are still violating the limit, but peace clause says nobody will take us to the court or the dispute, drag us to this dispute, but this is not a permanent solution. तो ये WTO का कंसर्न है कि if the government keep giving such subsidies that will encourage the production
and ultimately result into a distorting the trade, promote their exports through their policies, again distorting the trade. So that's why you see, अगर गवर्नमेंट ने खुद प्रोक्योर करके मार्केट में फूड ग्रेन्स रिलीज कर दिए तो सप्लाई बढ़ गई मार्केट में, एंड मार्केट में जैसे ही सप्लाई बढ़ गई द प्राइस विल कम डाउन, and the people who will be having, they will sell it to the exporters, and exporter will be selling to the international market at reduced prices, flooding the international market because of our subsidies, not because of the actual prices. So इसीलिए गवर्नमेंट नहीं रिलीज कर पाती, उसके ऊपर WTO है कि ये जो सब्सिडीज, चलो आपकी हमने फूड सिक्योरिटी की बात तो मान ली हम, ठीक है, लेकिन आप इसको लेकर मार्केट में थोड़ी नहीं रिलीज कर दोगे. गेटिंग माय पॉइंट? ये रहता है. तो ये कहानी है हाउ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज कॉन्फ्लिक्ट विद द WTO's लिमिट. ये कहानी है दोनों की डिस्प्यूट की. 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे, यही कहानी पे. ठीक है, अपने हिसाब से लिख लो जो भी लिखना है. एंड देन लास्टली लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज वी वर टॉकिंग अबाउट. सो आई नीड टू हाईलाइट what are the concerns in the indirect subsidy that made the government to go for the direct subsidies, that made the government to go for the direct subsidies. चलो, see, I told you subsidies can be given through 2 ways, indirect and direct. Yes or no? But nowadays you see the government is shifting from the indirect subsidy to the direct. Let me give you the example also. The first very common example that you can see is the LPG subsidy. Earlier, you were able to buy the LPG cylinders from the market at subsidized rate. But now, what you are doing? You are buying the cylinders from the market at the market rate. And those who are eligible for the subsidy that is coming in their account, that is known as DBT. Then PM Kisan ले लो scheme 6,000 rupees की. उसके अलावा direct benefit transfers have been, government is trying to be implemented in other areas also, whether it be food, whether it be fertilizers. ठीक है, but ultimately the focus is now to shift towards direct. Now they are moving towards direct. There must be definitely be some concerns with the indirect. Yes or no? Can you tell me those concerns? 1, 2, 3, 4, 5. बोलो. करप्शन, लीकेजेस. इसको देखो कैसे पुट करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है फर्टिलाइजर में. आप मुझे बताओ, फर्टिलाइजर में आई टॉक्ड अबाउट वन पॉइंट नोन एज one product, one price principle. If one product is being sold at 2 prices in the market, don't you think it will create distortion in the market? Why it will create distortion? Because one set of users are eligible for a cheaper price. लेकिन जो दूसरे यूजर्स होंगे वो क्या करेंगे? वो भी तो कहेंगे ब्लैक मार्केटिंग में इंडल्ज होंगे नहीं होंगे. Isn't it obvious? So the first indirect subsidy is it violate the principle that is one product, one price, because of which what happen, it results into market distortion, and this market distortion leads to leakages, corruption,
black marketing, corruption, black marketing, diversion to other sectors, all these points. Yes or no? Next, what another issue of this indirect subsidy? What another issue? सोचो. ट्रांसपेरेंसी से और अच्छा वर्ड. Very good. Issue of targeting. Now, issue of targeting, what I mean here is, now in this, how you are generating, like how you are coming up with the data कि यार ये target audience है, right user है. There is commonly under the targeting, there is a commonly problem, we call it as inclusion and exclusion error. Inclusion and exclusion error. Now what I mean with the inclusion? Inclusion means that suppose I am not entitled for this subsidy, but my name have been included already. So isn't it an error? Isn't it the subsidy going to the wrong person? On the other hand, the one person, suppose who is entitled to, his name is not there. That problem we call it as an exclusion error. उसको हम बोलते हैं exclusion error and inclusion error. So basically in both the cases, the subsidy is not going to the correct audience, the right target who is actually eligible for. जिसके लिए पर्पस है कि हम सब्सिडीज देते हैं. So the whole purpose of giving subsidy gets defeated if it don't go to the right audience. Are you getting my point? This is known as issue of targeting. Fourth, इसी में आ जाए घोस्ट बेनिफिशियरीज. अगेन सब पॉइंट यू कैन राइट इट ऑन घोस्ट बेनिफिशियरीज. आपने बचपन में सुना होगा कि घोस्ट राशन कार्ड बना दिए जाते थे एंड ऑल. फिफ्थ मतलब और नेक्स्ट पॉइंट सोचो और क्या हो सकता है इनडायरेक्ट सब्सिडी देने में. अरे सब वही है, अरे सब वही है जितना भी पॉइंट बोल रहे हो, सब टारगेट ऑडियंस में ही तो तुम बात कर रहे हो. अब इसमें देखो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब ये जो सब्सिडी देने के लिए, इनडायरेक्ट सब्सिडी देने के लिए गवर्नमेंट को एक पूरा हाई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं बनाना पड़ता है. लाइक कैसे सब्सिडी देनी है तो मेरे से पहले सिलेंडर जाएगा सपोज स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट से फिर कोई शॉप्स पे जाएगा. जैसे अगर मेरे को फूड सब्सिडी होती है तो राशन शॉप्स होती है, वहां पे केरोसिन भी मिलता है, फिर वो राशन शॉप्स वाले फिर वो देंगे आपको. तो एक ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है. लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में डाटा कंप्लीटली पता है गवर्नमेंट के साथ, सॉरी बैंक ने बैंक को दिए पैसे, ट्रांसफर टू दी पीपल अकाउंट. सो इजंट इट दिस रिजल्टिंग इनटू ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप? यस और नो? एंड दिस ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मेक दिस अ कॉस्टली एक्सरसाइज. एंड whenever this administrative setup come, the another word already is there in our mind, bureaucratic apathy. Bureaucratic apathy. So along with huge administrative setup, the next point is bureaucratic apathy. Lastly, if I tell you one more point, this subsidy is more like giving you the wheat or rice of not your choice. तो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है. सो इजंट इट लैक ऑफ चॉइस हियर, लैक ऑफ फ्रीडम, और इसको वर्ड बोलता है इकोनॉमिक सर्वे लैक ऑफ ह्यूमन एजेंसी. दैट इज यू हैव नॉट एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर ओन. तो यहां पे आप लिख सकते हो लैक ऑफ चॉइस और लैक ऑफ ह्यूमन एजेंसी और लैक ऑफ फ्रीडम, which makes the citizen just passive beneficiaries. Which makes the citizen just passive beneficiaries. Clear? These are the concerns of the indirect subsidy. Now these concerns were addressed by adopting the direct benefit transfer. ठीक है. सो अब मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थोड़ा सा लिखवा देता हूं. सो राइट इट डाउन. अ
about direct subsidies, write it down. The DBT scheme is a government initiative. The DBT scheme is a government initiative that aims to reform the delivery system for various social welfare schemes and benefits by transferring them directly to the bank account, by transferring directly to the bank account of the beneficiaries. To the bank account of the beneficiaries. Next point, it aims to eliminate intermediaries. And reduce leakages and corruption. It aims to eliminate intermediaries and reduce leakages and corruption in the delivery of benefits. Thereby improving the efficiency and effectiveness of the government's welfare program. Next point, it was introduced on 1st Jan 2013 and according to Economic Survey 2023 DBT has helped Economic Survey 2023 DBT has helped to transfer more than 26 lakh crore 26 lakh crore for central schemes. सब पॉइंट पे लिखना है इसके. यूनियन गवर्नमेंट had managed to save about 2.2 lakh crore 2.2 lakh crore as of 2.2 lakh crore as of March 2021 by removing the names of 9.4 crore beneficiaries across database. Next point, it has reformed the government delivery system. In the following ways. First subpoint. Brought transparency
and brought transparency and reduced instances of leakages. Next point, expanded Aadhaar coverage to all and scaled up the coverage of banking and telecom services. Third, ensures better targeting of beneficiaries. Next point, encourages the people, DBT encourages the people from rural and underprivileged background. DBT encourages the people from rural and underprivileged background to open bank account and thus promoting financial inclusion. Next point, it enables the beneficiaries to have greater control over their purse, enhances their decision making, power and overall empowerment. Next point, DBT allowed for the real-time tracking of fund disbursement helping to identify bottleneck and areas of improvement. Identify bottlenecks, helping to identify bottlenecks and areas of improvement. Last point, DBT has allowed the government to provide financial assistance effectively and transparently to farmers with lower transaction cost. Clear? So that's it about our subsidies, and here we